अमेरिका के इशारों पर नाचने वाले नाटो का नाटक चालू हो गया है। सीधे भारत को आंख दिखा रहा है, सीधे पीएम मोदी को धमकी दे रहा है। ये धमकी टैरिफ की है, जिसका जवाब केंद्रीय मंत्री ने ऐसा दिया जिसे सुनकर नाटो और अमेरिका की हेकड़ी निकल जाएगी। ट्रंप ने पहले ही रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैक्स लगाने की धमकी दी थी और अब नाटो चीफ ने भी ऐसी ही गीदड़ भभकी दी है। नाटो के चीफ मार्क रूटे ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस से तेल और गैस व्यापार जारी रखने पर 100% सख्त सजा की चेतावनी दी है। यह बयान उनका तब आया जब उन्होंने अमेरिका सीनेटरों से मुलाकात की और उनसे मुलाकात के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने को कहा। अब सवाल यह है कि नाटो जो एक सैन्य संगठन है, वो भारत जैसे स्वतंत्र देश को व्यापार नीतियों पर धमकाने वाला कौन होता है। नाटो चीफ रूटे ने कहा कि अगर आप दिल्ली, बीजिंग या ब्राजील में हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह आपके लिए भारी पड़ सकता है। ये धमकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने रूस से व्यापार करने वाले देशों पर भारी टैरिफ की बात कही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यूरोप खुद रूस से तेल खरीद रहा है, फिर भारत को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसके पीछे की राजनीति बताएं उससे पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और एस जयशंकर ने कैसे औकात दिखाई है नाटो चीफ को, अमेरिका को। दरअसल पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मामले में नाटो चीफ की धमकियों के एक एक धागे खोल दिए हैं। केंद्रीय मंत्री पुरी वेबसाइट फर्स्ट पोस्ट के साथ बात कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका ने भारत पर सेकेंडरी सेक्शन लगाने की धमकी दी, इसका भारत को होने वाले तेल सप्लाई पर क्या असर देखते हैं और हमारे देश का बैकअप प्लान क्या है, इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा है कि वे अपने दिमाग में किसी तरह का प्रेशर महसूस नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं अपने माइंड पर किसी तरह का प्रेशर नहीं लेता हूं और मैं नहीं समझता हूं कि मेरे बॉस का दिमाग किसी प्रेशर को लेने के लिए बना हुआ है और मैं अपनी ताकत यहीं से लेता हूं। उनका पूरा बयान सुनवाए उससे पहले आपको बता दें कि आखिर नाटो ने क्या अमेरिका के कहने पर ऐसा किया है, क्योंकि नाटो एक सैन्य गठबंधन है जिसका काम सामूहिक सुरक्षा है, न कि वैश्विक व्यापार पर नकेल कसना। नाटो चीफ रूटे का भारत को धमकाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। भारत का नाटो से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यह बयान ट्रंप की नीतियों के साथ तालमेल दिखाता है। ट्रंप ब्रिक्स देशों को अमेरिका विरोधी मानते हैं, उनकी मुद्रा को डॉलर के लिए खतरा समझते हैं। रूटे का बयान क्या ट्रंप के दबाव में दिया गया है, यह सवाल उठना लाजमी है। रूस से सस्ता तेल खरीदना भारत का आर्थिक फैसला है जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन नाटो चीफ रूटे की धमकी बताती है कि पश्चिमी देश भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, जबकि यूरोप खुद रूस से तेल खरीद रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में यूरोप ने रूसी तेल आयात में सिर्फ 1% की कटौती की है, फिर भारत को क्यों टारगेट किया जा रहा है? नाटो का भारत की व्यापार नीति में दखल देना कूटनीति की सीमाओं का उल्लंघन है। रूटे का बयान न सिर्फ अपमानजनक है, बल्कि गलत व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से दिया गया संदेश भी है। भारत ने हमेशा अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को प्राथमिकता दी है, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि भारत को नसीहत की नहीं साझेदारी की जरूरत है। ऐसे में नाटो चीफ रूटे को ये समझना होगा कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और शांति के लिए काम करता है, बिना किसी बाहरी दबाव के। ये धमकी न केवल गलत है, बल्कि एक स्वतंत्र देश की संप्रभुता पर सवाल उठाती है। अब चलिए सुनवाते हैं हरदीप पुरी का पूरा बयान, कैसे उन्होंने अमेरिका और नाटो को एक एक करके उनके धागे खोले हैं, कैसे पीएम मोदी की बात कही है, उन्हें बॉस बताकर कैसे प्रेशर न लेने वाली बात कही है और क्या कुछ एक रणनीतिक तौर पर भारत क्या कर रहा है वो बताया है। सुनिए। Well, first and foremost, madam, I don't feel any pressure in my mind, and I don't think my boss's mind is wired to feel any pressure, and that's where I draw my strength from. But I'd like to have a discussion with you on the hard facts. First and foremost, what are the facts? In February 2022, when the military conflict between Russia and the Ukraine commenced, we were buying, if I remember, 0.2% of our overall crude
from the Russian Federation. Today, yes, you are absolutely right, it has gone up considerably. But equally, during this period, India has diversified the sources of supply, and we have gone, I think, from about 27 countries that we used to buy from to about 40 countries now. But more than that, if you go into should you buy from a source 1 or should you buy from a source 2, we have been clear from the day go that we will buy from wherever we have to. Because the Prime Minister's commitment is in the final analysis to his consumer, to the Indian consumer. And I think that policy has stood us in good stead. We are probably one of the few, I would have, if I didn't have this enlightened an audience, I might have said we are the only, but no, we may not be the only. But for a country of our size, for a country of our consumption level, why do I say this? In the last 10, 11 years, 16% of the growth in the energy markets, crude oil, has come from India. And if you believe in the analysis of the International Energy Agency, by the way, I saw a statement that someone might be pulling out of there also, but let's leave it at that. They say, a very credible analysis, that in the next 2 decades, 25% of the global growth is going to come from India. Increase in oil demand. Okay, so today Russia is one of the main suppliers. I don't know what the figures were in 2022. Today, I think they produce about 9 million barrels a day. 9 million barrels a day, madam, is roughly 10% of the global production per day and consumption per day. I ask you a hypothetical question. Supposing you take 10% of the consumption off the table. There are 2 possibilities. One, the rest of the world, the whole world, stops consuming or consumes 10% less, which means what? Which means in a country, let's say, I can pick up any country, some people won't get heating in winter, some people won't get air conditioning in summer, some of the transport will stop flying. So 10% consumption reduction is not an easy thing, or something else will happen. You decide that 10% is going off the market, you don't want to reduce consumption, then you start buying more from the remaining 90%. You know what that would do to prices? The prices which were here would skyrocket. We did an analysis, my secretary who's sitting here and some of my other colleagues, that if more and more people were to buy from the other OPEC sources, you know what would have happened? Prices would have gone up minimum to $130, $140 a barrel. So if we were buying from any source that we could, I think we should be applauded. Not that point is very so no, but let me come to there's another point of this fact. No, I'm not saying that you are saying it, but some people say don't buy Russian oil. If that oil is sanctioned, sir, then what is our plan? It's not sanctioned, first of all. Not yet. No, it's never been sanctioned. No. If it is. No, so I'm coming. First of all, let's do the past, then we'll deal with the future. Another very interesting thing happened. It's not as if countries X, Y, and Z buy. I have some statistics here. I want to share those. And you were saying, what are the papers? Because I did some research. I knew you'd ask. Oil products. Turkey, the largest buyer, has purchased 26% of Russia's oil product exports. Turkey. You know which group they belong to. Followed by China, 13%, and Brazil, 12%. Now we come to LNG, natural gas. The EU was the largest buyer. EU is the European Union, purchasing 51% of Russia's LNG exports, followed by China, 21%, and Japan, 18%. Pipeline gas. The EU was the largest buyer, purchasing 37% of Russia's pipeline gas, followed by China, 30%, and Turkey, 27%. Now, if we have to discuss who's buying and who's not buying, I think
got stuck. No, don't worry. You know, when my colleague Mr. Jaishankar, when this whole process had started, when he was going for a discussion in the United States, he asked me over the phone casually, what happens if I'm asked about Russian purchases? And I said, friend, you tell them that they buy more in one afternoon. This is early days. They buy more in one afternoon than I buy in a quarter. I think the telephone line must not have been absolutely clear. So he ended up saying, I believe you buy more in one afternoon than I buy in a month. No, I meant in a quarter. Look. अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।